Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, students, to online video classes. I am Raza Ali Mugheri, lecturer physics at Cadet College, Panwakil. Today we will discuss about chapter number 7, named as circular motion and gravitation. Topics that we will discuss today are circular motion, uniform circular motion, centripetal acceleration, and centripetal force. Let me clear first thing. In this chapter, there are the main two topics, circular motion and second one is gravitation. All others will be subtopic of these two main topics. Now, what is circular motion? All those motions which we have discussed earlier, they will be called simply one directional motion. Either they will be on horizontal or they will be in a vertical. Now we are discussing about the motions that are along the two directions, x-axis and y-axis. Means that at the same time, simultaneously, the body moves in a two directions, that will be horizontal and vertical. Now what are the circular motions are? When a body moves in a circle path, its motion will be called as a circular motion. कोई भी बॉडी अगर किसी गोल दायरे के अंदर घूमे तो उस गोल दायरे के अंदर हरकत को हम उसका नाम देंगे सर्कुलर मोशन. देन वी हैव अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. व्हेन अ बॉडीज मूव इन अ सर्किल पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इट इज कॉल्ड इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. कोई भी बॉडी अगर सर्किल के अंदर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे तब वो बॉडी कहलाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. एज यू सी हियर इन अ डायग्राम वी हैव अ सर्किल. तो इस सर्किल के अंदर कोई भी बॉडी जब मूव करे तो उसकी मोशन को हम नाम देंगे सर्कुलर मोशन. अगर इस सर्किल के अंदर वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ करे, जिसका मतलब कि हर टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम हो. फॉर सपोज अगर मैं कहूँ कि कोई भी जिस्म, कोई भी बॉडी इस सर्किल के अंदर मुसलसल 1 घंटे के अंदर 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव करे, तब उसकी जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगी. नाउ एज यू सी कि दिस मिड पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ सर्किल. इस मिड पॉइंट से लेकर जहां तक बॉडी मूव करे, रोटेट करे, उस दरमियान के मुफासले को हम नाम देंगे रेडियस ऑफ सर्किल. On one complete rotation, that radius will be equal to, or that one complete rotation will be 360. कि एक complete round को हम यूनिट 360 के अंदर मेजर करते हैं, या जिसका रेडियन में यूनिट है 2 पाई आर. नाउ एज यू सी the radius of that circle will along the horizontal, motion of that body will move in a circle path will be in a vertical. So x-axis and y-axis, the both directions are in a one motion. Such motion will be called as a circular motion. Now centripetal acceleration, the acceleration which we have already discussed in previous chapters, that was simply the acceleration which produced due to the change in magnitude of velocity. Now keep one thing in your mind, whenever there is a change in magnitude of velocity or change in direction of velocity, in both cases the acceleration will produce. When there is a change in magnitude of velocity, the acceleration will produce, which is called as a linear acceleration. And when there is a change in direction of velocity, the acceleration will produce, which is called as a centripetal acceleration. Centripetal acceleration is simply defined as when a body moves along a circle path, if direction of velocity changes, in such condition, the acceleration will produce, which is called as a centripetal acceleration. Or such acceleration whose direction is towards the center of circle will be called as a centripetal acceleration. Let me clear it first. We are making a circular path.
In that circular path, the midpoint will be called as a center of circle. From center of circle where the body can easily rotate, which is called as a radius. Now, if we will cut the force from this point, the body will move in that direction. If it is at this place, it will move in this direction. If that body will cut at this direction point, it will move in this direction. Now, as you see, there are the different directions, and these different directions are the directions of velocity, which is changed at a every time. Okay, when there is a change in direction of velocity, the acceleration which will produce, that is called as a centripetal acceleration. The centripetal acceleration is always directed towards center of circle, as you seen in previous diagram. The centripetal acceleration is denoted by AC, where A is stand for acceleration and C is stand for centripetal. The centripetal acceleration is a vector quantity. It possesses both magnitude as well as direction. For its direction, it is always directed towards center of circle. The centripetal possesses a fixed direction that is always towards center of circle. Now for the magnitude of centripetal acceleration, we have a formula that is AC is equal to V square upon R, where the velocity of body and R is radius of circle. Now AC possesses direct relationship with the velocity of a body, or you may say simply speed or magnitude of velocity, and centripetal acceleration possesses inverse relationship with the radius of body. इसका मतलब ये कि अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को या किसी भी बॉडी के सर्किल के अंदर वेलोसिटी को या स्पीड को बढ़ा दें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी बढ़ेगी। अगर सर्किल के रेडियस को कम करें तो एक्सेलेरेशन ज्यादा होगी, अगर एक्सेलेरेशन ज्यादा करें तो रेडियस कम। देन वी हैव centripetal force. Sorry, we have a problem on centripetal acceleration, that is the moon revolve around the earth in an orbit that is approximately circle and mean radius 3.84 into 10 is power 8 meter. The speed of moon is 1022 meter per second. What will be the centripetal acceleration for moon? Before going to solve any problem in physics, first of all we will make the data. In data, we must write two types of values, known and unknown. Here, the speed of that moon is already given, that is 1022 meter per second, and the radius of that moon is also, that is 3.84 into 10 is power 8 meter. We have to calculate the centripetal acceleration, for which we have a formula, that is AC is equal to V square upon R. Now by putting the values in place of V, we are getting 1022, as it is a square in formula, we also make him here a square, and the value of radius is 3.84 into 10 is power 8. As we will solve these simple mathematically, answer, that is AC is equal to 2.72 into 10 is power minus 3 meter per second square. Now that was the centripetal acceleration of moon, which is rotating around the earth. The centripetal acceleration or linear acceleration both possess the same units, that is meter per second square. Now centripetal force. Before going to discuss the centripetal force, we have already discussed about the force in Newton's second law. According to Newton's second law, when the force acts on a body, it will always produce an acceleration in that body. तो यहाँ भी अगर किसी भी बॉडी के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो सर्किल पाथ के अंदर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को प्रोड्यूस कराने के लिए जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है या जो एजेंट है उस एक्सेलेरेशन को प्रोड्यूस कराने का, दैट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, which is defined as the force which causes a body to move in a circle path is called as a centripetal force. ये वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्किल के अराउंड मूव करवाए।
इट मीन्स कि अगर कोई भी बॉडी सर्किल के अंदर मूव कर रही है तो उसकी मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उस फोर्स को हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बॉडी है हमारे पास जिसका मास है m, वो किसी वेलोसिटी या स्पीड के साथ मूव कर रही है सर्किल के अंदर, जो स्पीड है हमारे पास v। तो इस तरफ ये सर्किल का रेडियस है जिसको हम डिनोट करेंगे r से। तो रेडियस सेंटर से लेके उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगी, जो इस बॉडी को सर्किल के अंदर मूव करवाएगी, उस फोर्स को हम नाम दे देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्किल there is a force acting towards the center of circle, such force is called centripetal force। अगर कोई भी बॉडी सर्किल के अंदर मूव कर रही है तो सर्किल की अंदर से, सेंटर से, मरकज से एक फोर्स लगेगी उस बॉडी के ऊपर, जिस फोर्स को हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force is denoted by Fc, where F stand for force and C stand for centripetal. It is again a vector quantity. It possesses both magnitude as well as direction. The direction of centripetal acceleration is always towards center of circle। वैसे ही जैसे सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, यहाँ भी जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स भी। नाउ getting the magnitude of force or centripetal force, we will use the given equations, given formula. By using Newton's second law of motion, Newton's second law for equation, F is equal to ma. Now we will find the magnitude of centripetal force. The F will be replaced into Fc, where m stands for mass, a is a linear acceleration. Here we get the centripetal acceleration, that is AC. As you see, the AC is equal to V square upon R. Then by placing the value, FC is equal to mv square upon R. This is the formula which we will use to find the magnitude of centripetal force, but its direction will always towards center of circuit. The SI unit of centripetal force is also Newton. Now we have a formula, an example on centripetal force. For suppose we have a body, its mass is 1500 kg, moving in a circle track of radius 2000 meter, constant speed of 20 meter per second. Find the centripetal force required for this purpose। कि एक कार जिसका जो मास है वो 1500 किलोग्राम है, किसी सर्किल के अंदर घूम रही है, उस सर्किल का जो रेडियस है वो 20 मीटर है और उसकी घूमने की जो रफ्तार है, तेजी है, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि उसके उस मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द सॉल्यूशन फॉर एंड डेटा के अंदर हमें मास गिवन है, दैट इज 1500 kg। आफ्टर दैट वी हैव अ वेलोसिटी that is 20 meter per second, then radius 20 meter। Formula for centripetal force is Fc is equal to mv square upon r। By putting the values in above formula, m की जगह 1500 kg, v की जगह 20 रख के स्क्वायर, रेडियस की जगह 20, सेम 20 को स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, लेकिन हम यहाँ स्क्वायर रूट को ब्रेक कर रहे हैं, 20 इंटू 20 अपॉन 20, तो 20 में कैंसिल हो गया। बाकी 1500 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, आवर आंसर विल बी 30,000 न्यूटन। नाउ द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दैट कार विल बी 30,000 न्यूटन। This is all for today's lecture. If you want to ask any question, ask in a comment section. Subscribe the channel and press the bell icon to get notification on every upload.